As high inflation and job losses ravage the masses, our uncaring elites hogging key state institutions are fighting feuds so intense that one fears a state meltdown. These ugly feuds show that in 75 years, we have failed to craft democratic institutions that can mediate societal conflicts via the rule of law. Pakistan was born out of elite Muslim fears about Hindu majority rule. It wasn't a coherent nation in 1947, but many pieces of a jigsaw puzzle that could, however, be put together by the expert hands of democracy to form one coherent picture of a nation. Instead, the elites sent a bulldozer to put them together, crushing them into even smaller pieces. Strong economies emerge in strong states, which are built on the base of coherent nations formed via democratic rule. But the same elites who feared Hindu majority rule before 1947 later feared even Muslim majority rule. So, they nixed democracy and thus a coherent nation and a strong state and economy. Only twice briefly did democratic evolution occur, in 1972-73 and 2008-2018. The first era was undercut by its own architect, Zulfikar Ali Bhutto, by his autocratic rule which let our bigger autocrats regain power. The second era saw progress on key axes of democratic development, devolution, fair sharing of resources, smooth civilian power transfer, institutional autonomy and national integration through the 18th Amendment, the 8th NFC Award, fair polls in 2013, the FATA merger, and the 2017 poll reforms. There were security gains against terrorism, balanced ties with China and West, talks with India, progressive social laws and the start of CPEC though badly managed. Even by regional Indian standards, these pluses are small. Yet they outdid those in all our other eras. Oddly, all this was done not by non-civilian forces that always promise progress falsely but by deeply flawed civilians in the PMLN, PPP etc. Oddly too, the party that paints itself as much better, PTI, had almost no role in it and in fact undercut this evolution via its 2014 Dharna and again in 2018 through allegedly rigged polls. The PTI did worse than PMLN in all domains, economic, political, social, security and foreign. But the rot started by the Pindi-PTI hybrid regime is so deep that even PDM is following the PTI path of autocratic misrule, instead of its own 2008 to 2018 path. Today, the nation is staring into the bottomless pit of a huge abyss as state institutions have become arenas for elite feuds and the economy is in free fall. One fears cataclysmic actions by institutions against each other, executive against judiciary or vice versa, and even within. Strangely, the institution in Pindi mostly responsible for this mess is acting aloof, perhaps letting civilians create such a mess that it can again present itself as the sole savior. Or perhaps, stung by its failed hybrid play, it is unsure of what to do. Just as the world catches a cold when the US sneezes, Pakistan sees chaos when the establishment experiences uncertainty. But it may yet assert itself to impose an artificial order that averts immediate meltdown. Many naively think elections will give stability and progress. Elections must certainly be held on time, but they will not heal the underlying societal fault lines which pit civilian upper-middle-class elites, the PTI and sections of judiciary and media, against the landed and business elites with the military middle-class elites. The best outcome would be the PDM following the Congress model to appoint a competent cabinet from within its ranks while the Sharifs and Zardaris run their parties. But even so, governance would fall well short of the visionary and dynamic one needed to solve our multiple problems as those within the PDM and other parties seem to lack the required capability. It's also unlikely that PDM will opt for this model given the many ambitious candidates in both families. So, the best outcome is neither good enough nor very likely. But so bad is our situation that the two more likely outcomes will cause even more misrule. A PDM regime run by family patriarchs will fail again. But a PTI win will be even worse as it is a machine built not to rule well but promote only slick social media campaigns, conflict and drama and misrule. This coupled with its internal divisions,
Imran Khan's divisive and anarchist mindset and his poor ties with key local and global power brokers mean that its second era will be far worse than its first one, where Pindi's steadying hand kept it from falling. Elections may only serve as a brief intermission, after which the movie of elite feuds and misrule resumes. Its ending can only be tragic. The writer is a political economist with a PhD from the University of California, Berkeley. Published in Dawn, April 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. चूँकि इफरात ज़र और मुलाजमतों के ज़िया ने अवाम को तबाह कर दिया है, हमारी बेपरवाह अशराफिया अहम रियासती इदारों में झगड़ों से इस कदर शिद्दत से लड़ रही है कि किसी को भी रियासत के ज़वाल का खदशा है। ये घिनौने झगड़े जाहिर करते हैं कि 75 सालों में हम ऐसे जमहूरी इदारों को तश्कील देने में नाकाम रहे हैं जो कानून की हुक्मरानी के जरिए मुआशरती तनाज़ात में सालसी कर सकते हैं। पाकिस्तान हिंदू अक्सरियती हुक्मरानी के बारे में अशराफिया मुसलमानों के खौफ से पैदा हुआ था। 1947 में ये एक मरबूत कौम नहीं थी, बल्कि एक पहेली के बहुत से टुकड़े थे जिन्हें जमहूरियत के माहिर हाथों के जरिया एक कौम की एक मरबूत तस्वीर बनाने के लिए इकट्ठा किया जा सकता था। इसके बजाय अशराफिया ने उन्हें इकट्ठा करने के लिए एक बलडोजर भेजा और उन्हें और भी छोटे टुकड़ों में कुचल दिया। मजबूत मईशतें मजबूत रियासतों में उभरती हैं जो जमहूरी हुक्मरानी के जरिए तश्कील पाने वाली मरबूत कौमों की बुनियाद पर तामीर की जाती है। लेकिन वही अशराफिया जो 1947 से पहले हिंदू अक्सरियती हुक्मरानी से डरती थी, बाद में मुस्लिम अक्सरियती हुक्मरानी से भी डरती थी। लिहाजा उन्होंने जमहूरियत और इस तरह एक मरबूत कौम और एक मजबूत रियासत और मईशत को ख़त्म कर दिया। 1972, 73 और 2008 में सिर्फ 2 बार जमहूरी इर्तिका हुआ। पहले दौर को इसके मेमार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी आमिराना हुक्मरानी से तबाह कर दिया था, जिसने हमारे बड़े आमिरों को दोबारा इक़्तिदार हासिल करने का मौका दिया। दूसरे दौर में जमहूरी तरक्की के अहम महवरों पर पेशरफ्त देखी गई। इख्तियारात की मुंतकिली, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, सिविल इख्तियारात की हमवार मुंतकिली, इदारा जाती खुद मुख्तारी और 18 तरमीम के जरिए इदारा जाती खुद मुख्तारी और कौमी इंज़माम, 8वां NFC अवार्ड, 2013 में मुनसिफाना इंतखाबात, फाटा इंज़माम और 2017 की इंतखाबी इस्लाहात। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फ़वाइद, चीन और मगरिब के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात, भारत के साथ मुज़ाकरात, तरक्की पसंद समाजी कवानीन और CPEC का आगाज़ अगरचे बुरी तरह मुनज़्ज़म किया गया था। यहाँ तक कि इलाकाई हिंदुस्तानी मेआरात के लिहाज से भी ये प्लस छूटे हैं। फिर भी उन्होंने हमारे दूसरे तमाम अदवार में उनसे आगे निकल गए। अजीब बात यह है कि ये सब कुछ गैर सिविलियन कुव्वतों ने नहीं किया जो हमेशा तरक्की का झूठा वादा करती हैं, बल्कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी वगैरह में इंतहाई नाकिस शहरियों ने किया है। हैरत की बात यह है कि जो पार्टी अपने आप को ज्यादा बेहतर समझती है, PTI का इसमें कोई किरदार नहीं था और दरहकीकत 2014 के धरने और फिर 2018 में मुबैना धांधली के जरिए इस इर्तिका को कम किया गया था। PTI ने माशी, सियासी, समाजी, सिक्योरिटी और खारजा तमाम शुबों में मुस्लिम लीग, नून से बदतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। लेकिन पिंडी PTI हाइब्रिड हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सड़न इतनी गहरी है कि PDM भी 2008-2018 के अपने रास्ते के बजाय PTI की आमिराना बदइंतजामी के रास्ते पर चल रही है। आज कौम एक बड़े गले में घोर रही है क्योंकि रियासती इदारे अशराफिया के झगड़ों का मैदान बन चुके हैं और मईशत तेजी से ज़वाल का शिकार है। इदारों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयों से डर लगता है, यानी अदलिया के खिलाफ और उसके बरक्स, और यहाँ तक के अंदर भी। हैरत की बात यह है कि पिंडी में इस बदनज़मी का ज्यादातर जिम्मेदार इदारा लाताल्लुकी का मुजाहिरा कर रहा है, शायद आम शहरियों को ऐसी गड़बड़ पैदा करने दे रहा है कि वो खुद को एक बार फिर वाहिद नजात दहिंदा के तौर पर पेश कर सके। शायद इसके नाकाम हाइब्रिड ड्रामे से परेशान, इसे यकीन नहीं है कि क्या करना है। जिस तरह अमेरिका के छींकने पर दुनिया सर्दी की लपेट में आती है,
इसी तरह पाकिस्तान को इस वक्त अफरा तफरी का सामना करना पड़ता है जब स्टेब्लिशमेंट को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह अभी तक एक मसनूई ऑर्डर नाफिज करने के लिए खुद पर जोर दे सकता है जो फौरी तबाही को रोकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंतखाबात इस्तेहकाम और तरक्की देंगे। इंतखाबात यकीनी तौर पर वक्त पर होने चाहिए, लेकिन ये बुनियादी मुआशरती खराबियों को दूर नहीं करेंगे जो सिविलियन अपर मिडिल क्लास अशराफिया, पीटीआई और अदलिया और मीडिया के कुछ हिस्सों को फौजी मुतवस्सित तबके की अशराफिया के साथ जमींदार और कारोबारी अशराफिया के खिलाफ खड़ा करती है। इसका बेहतरीन नतीजा ये निकलेगा कि पीडीएम कांग्रेस मॉडल की पैरवी करते हुए अपनी सफ़ों के अंदर से एक काबिल काबीना तश्कील दे, जबकि शरीफ और जरदारी अपनी पार्टियां चलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नेंस हमारे मुतअद्दिद मसाइल को हल करने के लिए दरकार दूर अंदेश और मुतहर्रिक से बहुत कम होगी, क्योंकि पीडीएम और दीगर जमातों में मतलूबा सलाहियत का फुकदान नजर आता है। इस बात का भी इम्कान नहीं है कि पीडीएम दोनों खानदानों में बहुत से पुरज़्म उम्मीदवारों को देखते हुए इस मॉडल का इंतखाब करेगी। लिहाजा बेहतरीन नतीजा ना तो काफ़ी अच्छा है और ना ही बहुत इम्कान है, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब है कि इन दोनों मुमकिना नताइज से मज़ीद बदइंतज़ामी पैदा होगी। ख़ानदानी सरपरस्तों की तरफ से चलाई जाने वाली पीडीएम की हुकूमत एक बार फिर नाकाम हो जाएगी, लेकिन पीटीआई की जीत इससे भी बदतर होगी, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो अच्छी तरह से हुक्मरानी करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि सिर्फ सोशल मीडिया मुहिमों, तनाज़ात और ड्रामों और बदइंतज़ामी को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ इसकी अंदरूनी तकसीम, इमरान खान की तफरीका अंगेज और उनरिक्सट जहनियत और अहम मकामी और आलमी ताकत के दलालों के साथ उनके खराब ताल्लुकात का मतलब यह है कि इसका दूसरा दौर उसके पहले दौर से कहीं ज्यादा बदतर होगा, जहां पिंडी के मुस्तहकम हाथ ने इसे गिरने से बचाया। इंतखाबात सिर्फ एक मुख्तसर मुदाखलत के तौर पर काम कर सकते हैं, जिसके बाद अशराफिया के झगड़ों और बदइंतजामी की फिल्म दोबारा शुरू होती है। इसका इख्तिताम सिर्फ अलमनाक ही हो सकता है। मज़मून निगार सियासी माहिर मुआशियात हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। अखज़ शदा बतारीख 4 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.